Good morning, respected principal sir, teachers, and our super amazing seniors. Today is a very special day because we are here to celebrate our seniors' farewell and also to officially accept the fact that the campus is going to feel thoda sa khali without you. This farewell is not just about saying goodbye, but also reliving all the memories, laughter, and unforgettable moments we have shared. सीनियर्स आप लोग सिर्फ नाम के सीनियर्स नहीं थे, आप गूगल से भी पास सॉल्यूशन देते थे, चाहे एग्जाम्स का स्ट्रेस हो, अटेंडेंस का टेंशन या लाइफ का कोई कंफ्यूजन, आप हमेशा एक लाइन कह देते थे, चिल करो यार हो जाएगा, और समहाउ हो भी जाता था। और सच कहूं तो आपके साथ स्कूल लाइफ ज्यादा इजी, ज्यादा फन और मेमोरेबल हो गई। आज थोड़ा मस्ती का दिन है, थोड़ा इमोशनल भी बिकॉज आप लोग जा रहे हो, पर आपकी स्टोरीज, एडवाइसेस और जोक्स यही रह जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू बिगिन द सेलिब्रेशन। दिल पर देती नू तेन नित दा रोना पै जाऊंगा, नाल रजेती जोगी दे तेन जोगन होना पै जाऊंगा। Get ready? महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक
कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। Let's give a big hand to the amazing dancers from class 11 CCD. Your performance. Music on. Someone's lagging behind. Go. Fast. Narada winners for this round. Big round of applause for him. Some confident boys here. And बाकी सब जो बैठ के हीरो बन रहे हैं वो असली हीरोज नहीं हैं. These are the real heroes with confidence. देखो इधर 4 कपल बने हैं, हमारे गर्ल्स में से 3 ही बन सकते हैं। Music on. 2, 1, go. We clearly have our
ज्यादा ही ऑब्वियस था. प्लीज कम ऑन, आप दो. Were you cheating? आप मेरे पीठ पीछे चीटिंग कर रहे थे, कर कर आए थे. अब भावना मैम ने बोला तो मैंने मान लिया. One, two, three, four, get on the dance floor. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Show it out, hit you with the body, hit you with the gimme, gimme, gimme. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Show it out, hit you with the body, hit you with the gimme, 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 gimme. Ulti dasha, घंटी लगे गोरी तेरे कानों का झुमका. आज मिला है हमको सुपर सुपर सा बंदा. थोड़ा बाएं से वो आज मिला है सारी दुनिया. जब देखो मगर लाल मिली, जब देखो मगर लाल मिली, नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. लेकिन एक सेकेंड,
ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਉਹ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣਗਿਣੀਆਂ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਉਹ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ Wow, that performance was absolutely electrifying. I think the energy in the auditorium has gone by 100%. The excitement doesn't stop here. It's time for another fun-filled game. So let's welcome Shreya and Rishika back on the stage to take this segment forward. ऐसे जादे दे दूंगी मैचिंग कर देगा तो दस दे सुन ला वे गिट्टू सिम चाहिदी यार फोटो में फरारी ला दी एक फोटो चुन्नी मेरी बाउल हो गया, रीमैच होगा। नारिया वे चुन्नी मेरी नारिया मेरे यार दी गड़ी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे नारिया वे मेरे यार दी गड़ी दे नाल दी सब की सकते हैं चंगे म्यूजिक स्टार्ट।
चिन माता देखे Brings us to the end of today's game. Thank you everyone for your wonderful participation. Get ready everyone to witness the highlight of the day, the moment we have all been waiting for, the title distribution ceremony. The first title is our school's shining star, inspiring everyone with
His Excellence. By the way, any guesses from audience side for UCSK Idol? Would like to invite Vivek Tiwari sir to please come on the stage and present this prestigious title to our amazing student Yashi. So we have a surprise winner today. Somebody who's looking really handsome. He was really good in studies and I hope he continues this feat again and he does well. Any guesses? So Mr. UCSKM, it's Parv, 12th PCM. All of you, please clap. I would like to just quote a small. It's always tough for me, this one day in the school every year, to speak about bidding farewell to each one of you. I mean, it's very tough to bid farewell to the people who have been the part of your life so closely, and you all have been so close to me and our entire fraternity that when you came here, some of you were 3 years old, some of you were 4 years old, some of you were 5 years old. You just started your life, came to us. We enjoyed your, childhood. We enjoyed you growing every day. We enjoyed you struggling in the studies. We enjoyed you excelling in the studies. We enjoyed you performing on the stage. We enjoyed you being nasty also at times. We enjoyed you being indisciplined. We enjoyed you. You were found always in discipline. So these two batches, if I talk about 11th this year and 12th this year, if I may call it the best batches we had in the school, it will not be wrong. You people have been phenomenal. We have enjoyed every and I started feeling like that there is no scope of having a tough principal in the school, though I could never be tough. But why it was not required? Because both the batches have never, created the situation where I need to take any adverse step. We have been enjoying together, not only with you little kids when you came till now, but also with your parents. I personally enjoyed the bond of friendship with each mother, each father, and each one of you throughout your tenure in the school. Some of you have spent 14 years, some of you have spent 12 years, 10 years,
So that's the beauty of UCSKM, where the child joins at a very younger age and passes out with flying colors after class 12th. I'm sure, like all the past batches, you will make us proud. And we have been observing your growth. We have been looking at you in a manner that you're the best ones. You're the most loved children we have in our lives. We cannot forget throughout the life you being with us. It's been actually very tough to see children going, but you're going for good. You're going to serve. You're going to grow. You're going to make your lives. You're going to make the lives of your family. You're going to make us proud. You're going to make your parents proud. And I'm sure each one of you will live to our expectations. And you have been doing this throughout the years you have spent with us. I would like to just quote a small incident or a kind of a story that who are the people who make a mark in their lives in shaping others' lives. So when you pass out from here, you should be clearly visible. The people unknown to you should be able to identify the brand UCSKM in your persona. And I'm sure this is going to happen. So there are two kinds of stones, the pieces of stone, which come from the same mountain or same mine. One which is able to bear with the curse of or the shaping of by a Shilpkar into an idol which goes and sits into the temple. वहीं से दूसरा पत्थर जो छेनी और हथौड़े की मार नहीं झेल पाता, वो कहाँ पड़ा होता है? कहीं भी रास्ते में, लोगों के पैरों के नीचे। एक ही पहाड़ से निकले गए दो पत्थर, एक जिसने छेनी हथौड़े की मार झेली और मूर्ति बना, उसकी दुनिया लाइन में लग के पूजा करती है, और एक जिसने वो मार नहीं झेली, वो रास्ते में पड़ा रहता है, लोग ठोकर मार के निकल जाते हैं। आई एम श्योर जो छेनी हथौड़ी की मार झेलने वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये किसी मंदिर की मूर्ति से कम आउटशाइन नहीं करेंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, आशा भी है, और आपको इस तरह का मेरा आशीर्वाद भी है। आप एक ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहां सिंप्लिसिटी स्ट्रेंथ रही है। आई विल कॉल अपॉन ईच वन ऑफ यू कि इतने सालों में जो संस्कार आपने लिए, वैल्यूज विच यू आर कैरिंग फ्रॉम हियर, प्लीज नेवर गिव देम अप, प्लीज नेवर कंप्रोमाइज विद योर वैल्यूज, प्लीज नेवर लाई टू योर पेरेंट्स, एंड अबव ऑल नेवर लाई टू योरसेल्फ। पता है ना, जब हम झूठ बोलते हैं, टीचर को झूठ बोल देते हैं कि मैं तो पढ़ा था, पापा को झूठ बोल देते हैं मैं पढ़ तो रहा हूं, मगर क्या अपने आप से भी झूठ बोल पाते हैं? आप मोबाइल में कोई रील्स देख रहे थे, पापा अचानक से आ गए, उन्होंने डांटा, तो आपने क्या किया? मोबाइल साइड में रखा, बोला मैं तो पढ़ रहा था। तो आपने पापा को तो झूठ बोल दिया, बट क्या खुद से झूठ बोल पाए? नहीं। So never do a thing which you and your inner does not allow. Do whatever you wish to do and whatever your inner allows you to do. So connect both the things together, that I will be doing this only when my inner self allows me. You will never go bad in life, never go wrong in life. Because on any step you take,
There is something inside which gives you a voice. एक अंदर से आवाज आती है, वो कहती है इसको कर दो, और एक आवाज आती है रुक जाओ. जिसने वो रुक जाओ की आवाज सुन ली वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा. जिसने वो कर दो की आवाज सुन ली, जहां हम कुछ गलत करने जा रहे हैं उसको सही रास्ते पे आना संभव नहीं है. तो मैं इस ओकेजन पे आप सभी को, आपके परिवारों को, आपके टीचर्स को अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग लाइफ में इतना उन्नति करें कि हम सब लोग आपको देखने के लिए हमेशा ऐसे देखें, कभी हमको नीचे नहीं देखना पड़े, कभी हमको सामने नहीं देखना पड़े. एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक अस प्राउड. वी आर देयर विद यू at every step in life. So, the last thing which I wanted to tell you is that after you go from here, watch your sleeping hours, watch what you eat. It's very, very important. If you at this point in time eat greasy, oily food, junk food, it will give you laziness in this body and mind also. You might fall sick also. Falling sick at this point in time, even for a day, will cost you dear. So health, mind, body, all three things you need to take care of. From now till the last exam is over. उसके बाद पिज्जा एक दिन के लिए खा सकते हैं. Though I don't permit, you know that. So wish you all the very best. Take care of yourself and take care of your mindsets. There is nothing which you do not know. Whole year you have studied. Don't come under the pressure. If at all any pressure builds up, teachers are there. Just call them and request the teachers to first pacify the stress in the child and then solve the problem. Wish you all the very best. A very good morning to everyone present over here. Respected Principal Sir, Bhavna Ma'am, teachers and all my dear friends. Standing here before you all as the head girl of the school is an honor I will always cherish. This moment is emotional and very precious, not because we are leaving, but because we are taking countless memories, blessings and values with us. I would like to express my heartfelt gratitude to our Principal Sir and teachers. Your constant guidance and encouragement and belief in our abilities gave us the strength to grow. You did not just taught us subjects. You taught us how to think, how to lead, and how to become a responsible citizen. Serving as a head girl has been a privilege and a great learning experience. I am thankful for all my fellow council members for the support and teamwork. As we move forward into the new chapter of our lives, let us carry our school values with pride and confidence. Head Girl 2025-26 signing off. Thank you. आ रहे हो आप जो राज परिवार के वफादार हैं इस तरफ आ जाएं। Nunca todas las carnes hasta buscar quem bumla मोरिनो सुकू लो आपको क्या बोल रही उबला हुआ अंडा मांग रहा है अंडा जय महेशमती से महिष्मती मैली हो गई रक्त से नहला दो
का सुना गिरीश का सुनेंगे अब आपको दिखाते हैं एक मस्ती भरा डांस। म्यूजिक गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे भूमि खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी मुझे मुंडा खोजेली। Good.